Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hi to all. So welcome to another class of educational psychology, and here we learn about the another concept of psychology, and that is ERIKSON'S theory of psychosocial development. Theory of psychosocial development or social development भी हमें ताकू कही परिवा social development. तो एथिरे जो कॉन्सेप्ट रहिबो बेसिकली आमे देखिबा कोन कोन कॉन्सेप्ट अछि आ ए कॉन्सेप्ट रे निश्चित भाव रे आमे विभिन्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पाइबा और एकेडमिक पर्पस रे भी आमे ताकू नोट करि परिबा आ ताकू आमे एग्जाम पॉइंट एग्जाम रे भी लिखि परिबा. तो बेसिकली जो वर्तमान आगु को एग्जाम आसुची जेमिति कि हमरो हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो बा हमरो जो आसिला OSSTET एग्जामिनेशन हो OTET एग्जामिनेशन हो CTET एग्जामिनेशन हो तो एई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे that concept is very important. So let's start about ERIKSON'S theory of psychosocial development or social development. Okay, let's start. Then what we learn here in this class? The first one is ERIKSON'S theory of psychosexual development. The concept बाबदरे देखिबा. Then ERIKSON'S stages of development जो 8 stages रो कथा ERIKSON'S कहिसंती 8 stages ता ऊपर हमें डिस्कशन करिबा. Then strengths and weaknesses of ERIKSON'S theory upre jiba and why was ERIKSON'S theory is important ta pakhare ta babadare ame discussion kariba. So in this class we cover all the 4 points. Let's start one by one. So the first one is ERIKSON'S theory of psychosocial development. The theory of psychosocial development is also known as well-known theory of ERIKSON that tries to explain the development of personality which takes place through a series of stages since childhood. Okay, तो childhood थारू गोटे series of stages रे आमर personality केमिति periodically develop होउची सेही concept बाबदरे because personality is very closely associated with our society. So according to our society or need of society we develop our personality. So here in different stages how our personality develop in periodical manner and जो concept को हमें psychosocial development बोली भी individual रो कही परचंती. And the theory of psychosocial development describes the impact of social experience across the whole lifespan. Okay, social experience throughout the whole lifespan. In the process of social interactions, a person develop a sense of identity of oneself. Okay, because society provide individual their identities. So here by this theory we can understand how society provide their identities to every individuals. जो डेवलपमेंट होची इंडिविजुअल को स्टेज रे केमिति होची से डेवलपमेंट बाबदरे ए थ्योरी कांसेप्ट ए थ्योरी उटे प्रॉपर नॉलेज दे परिबो. Then egocentric is one of the most concept of ERIKSON'S theory. This is term given to the conscious sense. Okay, conscious ego identity जोटा हमें कहउचंदी conscious sense रे हमरो से जिंसटा रुहे हम आइडेंटिफाई करि परंती properly of self that one develop through the social interactions. Okay, that means we are the part of society. तो ए जो आइडेंटिफिकेशन रो ए जो कांसेप्ट हम पाखरे आसुची that called ego identity. सोसाइटी हमको अडॉप्ट करिची, सोसाइटी हमको गुटे आइडेंटिफिकेशन देइची, सोसाइटी हमको रिकॉग्निशन करूची, सोसाइटी रे हम गुटे पार्ट एंड पार्सल होउचंती, सोसाइटी रे हमरो किछि कंट्रीब्यूशन रहउची. तो सेही सब कथा जदी प्रॉपर्ली हैला देन an individual we found develop ego identity concept. Then according to ERIKSON'S, the sense of self changes or one goes through a various stages of personality development. Okay, so in every stage of life there is a new information and experiences that present in one's life. Okay, आमे प्रति स्टेज रे नुआ नुआ कथा नुआ नुआ जिंस हम लाइफ रे पाइबा जते आगु लाइफ रे जीवो हमर प्रथम रु चाइल्डहुड स्टेज पाखरु आमे नुआ नुआ जिंस एक्वायर करिबा हमर पर्सनालिटी ग्रोथ होबो. And these are the challenges one face to the sense of self or ego identity. तो ई समय रे भी कोन हुए ना individuals face different problems or challenges for the sense of self or ego identity. The experience or facing these challenges determines
one's ego identity or shape one's participations of life. तो यही experience रू आमे सिखिबा लर्न करिबा आम भितरे proper development करिबा. Then these are the concepts of ERIKSON'S stages of development or ERIKSON'S theory. Now we discuss the different stages of development जोटा कि ERIKSON'S define करिसेंती. Okay, so here there are 8 stages defined by the ERIKSON'S. So 8 stage रे केमिति केमिति development होउची गुटे टेबल फॉर्म रे आमे देइचंती तापर आमे गुटे गुटे पार्ट को क्लियरली बुझिबा. The first one is trust and mistrust. Okay, trust and mistrust. एक वर्ड रो आमे बुझि परथुवा खाली खाली वर्ड को एटी टिके टिके देखि दबा. ट्रस्ट आमे कहा पर ट्रस्ट करचंती कहा को ट्रस्ट करू नांती. तो एई जो एटीट्यूड आम पाखरे केते बेले थाए ना 0 to 2 years रे थाए. ओके, ए कांसेप्ट को आमे भलो भाबरे देखिचंती. एंड इंपोर्टेंट रिलेशंस एट द स्टेज किए ना मदर को सहित वेरी क्लोज थांती आमे. आ क्राइटेरिया डोमिनेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेज कोन ए स्टेज रे कोनटा इंपोर्टेंट डोमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल पाखरे थाए ना होप थाए. ओके, then the second stage is autonomy versus shame and doubt. So ए स्टेज ता तमर केतेलु स्टार्ट होबो ना 2 to 4 years रे स्टार्ट होबो. तो हियर इंपोर्टेंट रिलेशंस का सहित थाए पेरेंट्स थाए मां बापा अदर मेंबर्स जो माने क्लोजली थांती. आ ए जगह रे जो डोमिनेटिंग क्राइटेरिया का कोन था इंडिविजुअल पाखरे डेवलपमेंट हुए ना विल पावर. Then the third one is initiative and guilt. Okay, तो ए स्टेज ता केतरु केते स्टार्ट होउची ना 3 to 5 years रे स्टार्ट होउची. एठी भी से बेला फैमिली ऑल द फैमिली मेंबर्स आर वेरी क्लोज टू द इंडिविजुअल. एंड हियर डोमिनेटिंग क्राइटेरिया कोन रहिबो कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल पाखरे ना पर्पस. Then the fourth one is industry and inferiority. तो एटा को स्टेज रे को एज रे होबो ना 5 to 12 years एज भितरे होबो. ए जगह रे को माने क्लोज ना नाइबर्स एंड स्कूल मेंबर्स जो माने पीयर ग्रुप रहिले फ्रेंड्स रहिले टीचर्स रहिले एंड आल्सो तो सोसाइटी रे जोठ रहउचंती तांको सराउंडिंग रे जो मान रहउचंती ऑल आर वेरी क्लोज टू द इंडिविजुअल. तो ए जगह रे डोमिनेटिंग क्राइटेरिया कोन रहिबो ना कॉम्पिटेंसी. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन जोटा कि स्टार्ट होउची 13 to 19 इयर्स भितरे. आउ एठी रोल मॉडल जो माने अछंती दे आर क्लोज ही जानती सेमान को भलिया हबा पे इंडिविजुअल चेष्टा करे. ड्यू टू दैट we at that stage we found role models are very close to the individual. And here so fidelity that is the dominating characteristics which we found within the individuals. Then intimacy versus isolation जोटा कि 20 ରୁ 24 years रे स्टार्ट हे कि 24 ରୁ 39 years पर्यंत कार केते बेले एमिति फ्लक्चुएशन हुए स्टार्ट हे कि जाए. तो ए जगह इंपोर्टेंट किए ना लाइफ पार्टनर फ्रेंड्स दीज आर द इंडिविजुअल्स हु आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर द individuals. And ए जगह कोन डोमिनेटिंग क्राइटेरिया रुए ना लव एंड अफेक्शंस. The next one is the generosity and stagnations. तो ए स्टेज ता केते बेले स्टार्ट हुए ना 25 ରୁ 64 इयर्स का पाकरे बा 40 ରୁ 64 इयर एमिति डिफरेंट इंडिविजुअल को पाकरे हम डिफरेंट एज रे पाइबा. आ ए जगह को माने वेरी क्लोज ही जानती ना वर्कमेट्स. आ एठी कोन डेवलपमेंट हुए बेसिक डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज केयर. And next one is the last that is integrity versus despair. तो एटा 65 रू चली कि डेथ पर्यंत टिल डेथ पर्यंत चले. तो एई जगह रे ह्यूमैनिटी मैनकाइंड ई भलिया कांसेप्ट आम भितरे डेवलपमेंट हुए आमे ता सहित वेरी क्लोज ही जानती. एंड आम भितरे सेतेबेले कोन आस जाए ना कोन डोमिनेटिंग क्राइटेरिया आम पाखरे थाए ना विजडम पांती आमे विजडम को आमे स्क्वायर करि पारंती. ओके, सो दीज आर द 8 इंपोर्टेंट स्टेजेस व्हिच आर गिवन बाय एरिक्सन्स. आ ए स्टेज रे बा सोशल स्टेज बोली हम कहि परिबा. ए स्टेज रे इंडिविजुअल केमिति डेवलपमेंट होउची से बाबद रे डिस्कशन करिबा. गुटे गुटे स्टेज को हम वर्तमान नबा. द फर्स्ट स्टेज इज साइकोसोशियल स्टेज दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ओके, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जोटा एप्रोक्सीमेटली 0 to 2 इयर्स भितरे पिलांको पाखरे देखा जाए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. This is the first stage of ERIKSON'S theory of psychosocial development. This stage occurs in between birth to 2 years of the child. Okay, तो birth through 2 years पर्यंत ए स्टेज ता चलिबो. इंपोर्टेंट कांसेप्ट मन रखिबा को स्टेज रे कोन रहउची को ईयर रे कोन रहउची. ओके, द फर्स्ट स्टेज इज ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जोटा कि 0 to 2 years बा birth through 2 years पर्यंत अछि ताको भलो से मन रखिबा. And it is a significant stage because at this phase of life an infant is totally dependent on quality of a caregiver. Okay, a giver, not giver, caregiver. Okay,
तो क्वालिटी ऑफ केयर गिवर बा गिवन जो कथाटा भी जहाँ अच्छी तो ताहारी उपरे ही टोटल आमर लाइफ टाक डिपेंड करे आम से अनुसार नरिश होती आगु आगु से अनुसार आम डेवलपमेंट हुए इफ द प्रॉपर केयर इज गिवन टू द चाइल्ड वाज will develop trust. That means those individuals who take care okay of individuals तो आमे सेही मान को ऊपरे हमरो ट्रस्ट डेवलपमेंट हुए कारण सेही लोकटी हमरो लालन पालन करछि सेही लोकटी हमकु खाइए पे दोछि सेही लोकटी हमकु सुउछि सेही लोकटी हम कथा बुझुछि ओके तो सब कथा जतले गोटे लोक केयर निए ताहारी ऊपरे हमरो ट्रस्ट बढ़ी जाय ओके तो एई कांसेप्ट एई कथा कहूछि and this is considered as important as this basics trust is caregiver will make a child feel safe and secure in most of its future interactions okay तो always जे caregiver थिबो ता पाखरे आमे बेसी सिक्योर फील करू आमे सेफ हम निजो को फील करू आज नुए माने फ्यूचर रे भी सेम कथा हमरो डेवलपमेंट हे की रही जाय then if caregiving is inconsistent not dependable and reject in nature the child develops sense of mistrust okay जदि केयर गिविंग जोटा इनकंसिस्टेंस रहिला बा डिपेंडेबल नॉट डिपेंडेबल रहिला बा रिजेक्टिंग इन नेचर रहिला आमे जेमिति कि पिला को पेल दबा छी छी करिवा बा विभिन्न प्रकार जो हमर अलगा एटीट्यूड जदि पिला को ऊपर देखैले देन ऑटोमेटिकली पिलार आम प्रति मिस्ट्रस्ट रो कांसेप्ट डेवलपमेंट हबो व्हिच इज कैरिड ओवर ए फ्यूचर इंटरैक्शंस आ जोटा कि केवल सही समय रे फ्यूचर इंटरैक्शंस रे भी सेम कांसेप्ट ता भितरे डेवलपमेंट हे की रहिबो thus when the child develops basic trust in the caregiver a sense of hope and confidence in the world is developed okay hope और confidence रो development होबो जते बेले से trust रो development हुए the world result in the child having an optimistic view of the world the opposite is true for those child who fail to develop trust okay जो मान करो trust development होची तांको पाखरे optimistic view जो वर्ल्ड को देखिबार गोटे प्रॉपर गोटे नजरिया जोटा आमे कहउचंदी दैट इज डिफरेंट आउ जहा पाखरे मिस्ट्रस्ट रहिबो ताकू टोटल बा गोटे वर्ल्ड को देखिबार व्यू ता डिफरेंट हबो ओके कारण मु जदी प्रथम रु जो प्रॉपर केयर पाइची मते प्रॉपरली जो कोन करा हेची ना नरिश करा हेची देन ऑटोमेटिकली दैट इंडिविजुअल बा मो पाखरे पॉजिटिव एटीट्यूड आसीबो टू व्यू द वर्ल्ड जहा पाखरे मिस्ट्रस्ट वेरी अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ रु ता पाखरे मिस्ट्रस्ट कांसेप्ट डेवलप हेची ताले से जतबेले इन फ्यूचर वर्ल्ड को देखिबो तो सेतबेले समस्त को ट्रस्ट करिया ता बेटे कष्ट हे जिवो their sense of mistrust leads them to experience depressions and they would be withdrawn from the people okay people pakru लोकमान सहित मिसिबा बंद कर देबे लोकन pakru दूरे आसीबे and may even develop paranoia at the later point of टाइम तांको मुंडो भितरे बा तांकर गुटे जो पारानिया कांसेप्ट तांको भितरे डेवलपमेंट हबो जोटा कि नाही किंतु ताको से बेला लागिवो तो ए बेला विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम्स क्रिएट हबो इफ द इंडिविजुअल डेवलप मिस्ट्रस्ट कांसेप्ट विद इन देम ओके देन द नेक्स्ट स्टेज दैट इज स्टेज ऑफ सेकंड स्टेज एंड दैट इज ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट ऑटोनॉमी गुटे कांसेप्ट और सेम एंड डाउट अनदर कांसेप्ट एंड जोटा कि स्टार्ट होची केतेरु ना 2 to 4 इयर्स 2 रु 4 वर्ष भितरे कांसेप्टटा डेवलपमेंट हुए The second stage of ERIKSON'S theory of psychosexual development occurs during the early childhood period जोटा कि हमें जानि छथि 2 to 4 इयर्स भितरे early childhood period रहि जाउची तो इटा early childhood period रे मेनली हमें देखंती autonomy versus same and doubt एग्जाम रे क्वेश्चन आसे autonomy versus same and doubt कोन स्टेज रे आसे ऑप्शन ले लेटर चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड लेटर एडोलेसेंस अर्ली एडोलेसेंस एमिति क्वेश्चन रे थिबो तो तुमको अर्ली चाइल्डहुड मारिबार हमर अछि कारण हमको एज टा भी मन रखिबा हमें 2 to 4 इयर्स भलो से ए कांसेप्ट गुडा जोगुडा कुहा होछि सेही थ्रू ही एग्जाम रे क्वेश्चन आसे ओके देन एट दिस स्टेज चिल्ड्रन आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल तो ई स्टेज रे कोन डेवलपमेंट हुए पिलांको पाखरे ना पर्सनल कंट्रोल रो डेवलपमेंट हुए and ERIKSON'S believed that toilet training was a vital part of this process तो ए स्टेज रे आउट कांसेप्ट डेवलपमेंट हुए टॉयलेट ट्रेनिंग कांसेप्ट तो मन रखिबा ई कांसेप्ट को भी तो टॉयलेट ट्रेनिंग कांसेप्ट को स्टेज रे डेवलपमेंट हुए ना ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट बा जदि एज कथा कुआ हिथिबो ऑप्शन ले देथिबो क्वेश्चन रे तो 2 to 4 इयर्स भीतर हुए टॉयलेट ट्रेनिंग दैट मींस दे शुड मैनेज द प्रोसेस ऑफ टॉयलेट बाय देयर ओन सेल्फ ओके and he believed that learning is control one's bodily functions leads to feeling of control and sense of independence likewise developing control over the choice of food
टॉयज क्लोथिंग इज इंपोर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओके तो ये सब डेवलपमेंट पाई ये कथा गुडा को भी हमें मेंटेन करिया पई पड़े then if a child is able to have a sense of personal control जहाँ पाखे personal control लो sense अच्छी then he or she will feel secure and confident and if they do not succeed then it might be leads to be inadequacy or self doubt okay जदि ता पाखे सेल्फ कंट्रोल डेवलपमेंट हैला ताले सिक्योर फील करिवो से कॉन्फिडेंट फील करिवो दीज आर कॉल्ड ऑटोनॉमी कांसेप्ट ऑटोनॉमी रो कांसेप्ट आ जो पाखे निजर कॉन्फिडेंट निज ऊपर नाही पर्सनल कंट्रोल नाही ता पाखे इनएडिक्वेसी एंड सेल्फ डाउट रो कथा डेवलपमेंट होबो जोटा को हम कोन कहउछन ना सेम एंड डाउट thus autonomy develops if a child is guided positively through praise जदि autonomy केतल डेवलपमेंट हुए ना if we guided the individuals positively through praise then fairness firmness encouragement and gentleness तो हेले ऑटोमेटिकली से इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होबो ता चिंता करिबारे जो थिंकिंग प्रोसेसिंग करिबारे बा तार गुटे कोन गुटे आइडियाज दबारे ए सब जिंस रे तार ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट होबो तो सेही कांसेप्ट को हम ऑटोनॉमी बोली कहिबा एंड दिस विल रिजल्ट इन चाइल्ड हैविंग ए सेंस ऑफ विल एंड गुड सेल्फ एस्टीम ता भितर विल रो डेवलपमेंट होबो आ गुड सेल्फ एस्टीम रो डेवलपमेंट होबो जते बेले ऑटोनॉमी डेवलपमेंट होउची एंड इफ ए पेरेंट थ्रू परमिसिव हारस एंड डिमांडिंग the child can feel defeated and experience extreme shame and doubt बुझी हुची कांसेप्ट ता कोन जदि हमर पेरेंट्स माने परमिसिव हेबे हारास हेबे हारासिंग प्रोसेस रे हमकु रखिले सब बेले देन डिमांडिंग हम पाखु रहिला सब बेले तांकर डिमांड को हम फुलफिल करिया पय चेष्टा करतुबा देन आमे आम कथा के चिंता करि परिबो ना पिला ता कथा के चिंता करि परिबो तो एई सब केस रे कोन हुए ना पिलाटा डिफिटेड फील करे आउ ऑटोमेटिकली से कहा कोउटी की पळेबो ना सेम एंड डाउट को पळेबो दिस माइट रिजल्ट ए माल एडॉप्टिव वेज टू गेनिंग फीलिंग ऑफ कंट्रोल पावर और कॉम्पिटेंसी ये कथा को जीवा पई तापको डिफिकल्टीज बा डिफिकल्टी से फेस करे फॉर इंस्टेंस following strict rules and regulations might give a false sense of competency this could result in a form of obsessive behavior if the child is given no limits or guidance the child can fail to gain any shame or doubts and be impulsive in its behavior तो जदि से प्रॉपर्ली से स्टेज रे प्रॉपर्ली ऑटोनॉमी को मैनेज न करि परछि सेल्फ डेवलपमेंट निजर जदि न करि परछि देन ऑटोमेटिकली से कोन करिवो ना से पिलाटा सेम आउ डाउट आड को पळेबो आउ ता भितरे इंपल्सिव बिहेवियर डेवलपमेंट हे जिवो ओके सो दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी देन द थर्ड स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जोटा कि 3 to 5 इयर्स भितरे आमे पाइबा एप्रोक्सीमेटली ए ईयर भितरे आमे बेसिकली देखु इनिशिएटिव वर्सेस guilt the third stage occurring during the preschooling years when a child started asserting his or her power and able to get control over the world okay चेष्टा करे कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड को कंट्रोल करिया पई बा वर्ल्ड रे तार निजर गुटे आइडेंटिटी क्रिएट करिया पई से ट्राई करे से स्टेज रे तो तार पाखरे विभिन्न प्रकार नुवा नुवा कथा डेवलपमेंट होबा स्टार्ट हो जोटा कि प्री स्कूलिंग स्टेज रे तारो होई थाए then through directing play and other social interactions then children who are successful at this stage feel capable and able to lead others okay जदि से सक्सेसफुल हैला who are successful at that stage automatically तांकर डेवलपमेंट फास्टर हुए से डेवलपमेंट को लीड करके आगु को जांती and those who fail to acquire these skills and left with a sense of guilt self doubt and lack of initiative जदि सक्सेस प्रॉपर्ली न मिलुची जो जो नुवा नुवा इनिशिएटिव नियंती तांकु निजको निजे आइडेंटिफाई करिया पई तांको निजर आइडेंटिटी को जो गोटे पोजीशन दबा पई तो जदि से माने सक्सेस हे गले तो तांको पाखरे इनिशिएटिव रो कांसेप्ट डेवलपमेंट होबो जदि फेलियर हेले ताहले तांको भितरे कोन डेवलपमेंट होबो ना गिल्ट रो डेवलपमेंट होबो सेल्फ डाउट रो डेवलपमेंट होबो और लैक ऑफ इनिशिएटिव रो डेवलपमेंट हे जिवो हेंस इफ पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव of child's efforts to show initiative जदि पेरेंट्स बा अदर जो एल्डर्स अछंती दे आर वेरी सपोर्टिव इन नेचर थेइतिबे पिलाटा जहा इनिशिएटिव नउची ताकू सपोर्ट करिबा ताकू एनकरेज करिबा ताकू प्रॉपर्ली फैसिलिटेट दबा ए सब कथा जदि गार्डियन बा पेरेंट्स करंती द चाइल्ड डेवलप्स पर्पस एंड सेट ए गोल
and act in way to reach them, whereas if child are punished, okay, तो पहुँचबा बा से गोल को अचीव करिया पई सेट करिबा अचीव करिया पई से ट्राई करे किंतु जदि आमे चाइल्ड को पनिश्ड कले फॉर अटेम्प्ट्स टू शो इनिशिएटिव नुआ नुआ इनिशिएटिव जतबेले अटेंड कला आमे ताको पनिश कले फॉर एग्जांपल मु एटी देबी गोटे पिलाटी चित्र करूची भलो ठीक अछि तो दैट इज वन इनिशिएटिव एट दैट स्टेज किंतु जदि आमे चित्र करूची ताको आमे एनकरेज कले ताको विभिन्न फैसिलिटीज देले ताको गोटे प्रॉपर्ली गाइड करिया पई गोटे जो मोर लर्न इंडिविजुअल को आमे ताको रखिले तो ऑटोमेटिकली ता पाखरे डेवलपमेंट हो गोल सेट करबा सेही से बहुत आगु को भी जाई पारे किंतु जदि सेम वे रे चित्रटा करूची आमे ताको पिटापुटी करिकी ताको पनिशमेंट देईकी कोन कहबा जे ए स्टेज रे तू पाठ पढिबू ए स्टेज रे आ तू चित्र भितर किछि करि परिबू ताले ऑटोमेटिकली से जो इनिशिएटिव नैथिला से इनिशिएटिव को से बाहरी आसीबो निजो को निजे गिल्ट फील करिवो they are likely to develop sense of guilt which is excess a lead of inhibitions okay lead to inhibitions then the fourth stage that is industry versus inferiority okay तो ए स्टेज टा को ईयर रे देखा जाए ना 5 to 12 years भितरे तमे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज देखिबो कैरेक्टरिस्टिक्स and these stages cover the early school जोटा हमें जाई थांती and the latency stage जोटा just early school stage पर जतबेले हम न्यूली माने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को जानती that stage is known as latency stage काहे ना सही स्टेज रे बहुत क्विकली हमें बहुत जिंस ग्रास्प करि पारू and at this stage of the lifespan a child started developing a sense of pride in their accomplishment and abilities with the help of social interactions तो से प्राइड फील करिवो केते बेले तो जते बेले से किछि काम को अकम्प्लिश करूची सक्सेसफुली और सोशल इंटरेक्शन जते बेले प्रॉपर्ली से करि परछु एट दैट टाइम से प्राइड फील करे ओके and if the child is encouraged and praised by parents and teachers then he or she develop a feeling of competency and belief in their skills that concept is known as industry ओके ता पाखरे एई रो कांसेप्ट डेवलपमेंट हो कॉम्पिटेंसी ता पाखरे अछि बोली सी निजे फील करि परिबो आउ तार स्किल ऊपर बिलीव रहिबो जे हम एई स्किल को नेकी कोन गुटे करि परिबो दोज हु रिसीव लिटिल और नो एनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स टीचर्स और अदर पीयर्स विल डाउट देयर एबिलिटीज टू बी सक्सेसफुल जोटी की इन्फेरिटी से फील करे निजो को निजे इन्फेरियर फील करिवो जे मु किछि करि परिबिनी मोर प्रॉब्लम अछि मु आ कलेटा भूल हबो एई भलिया कांसेप्ट ता भितरे डेवलपमेंट हबो So if caretaker do not support the child, feeling of inferiority are likely to develop. Okay, जदि आमे caretaker जदि properly support पिला को न करूची, then automatically inferiority feeling development होबो likely to develop, and this might lead the child to become an underachiever. Okay, तो जदि आमे properly आमे ताको care न करूचंती बा care जो caregiver person ताको जदि properly support न करूची, then automatically that individual become an underachiever in future. Then encouraging the child to feel overcompetent might make a child swallow persons not being able to reflect on personal deficits. So a personal deficit जहाँ रहिला जो कौन होबो ना जो ए सब कथा गुडा को जो माने ओवर कॉन्फिडेंट थांती जो मान को हम प्रॉपर्ली एनकरेज करि थांती से माने सुंदर भाबर ताको मैनेज करि पारंती ओके सॉरी so that is the concept of industry versus inferiority आउ जोटा कि मन रखिबा 5 to 12 years भितरे होउची ओके then come to the next stage of life that is identity versus confusion जो स्टेज ता कि 13 years to 19 years पर्यंत हमर चलिबो and that is the fifth stage of development occurs at the stage of adolescence okay and at this stage children explore their independence and develop sense of self ए स्टेज रे जस्ट एडोलेसेंस को इन करि जाई थांतो हमें करि जाई थाउ जो जगह रे एडोलेसेंस रो जो बळे कैरेक्टरिस्टिक्स ए जगह रे मध्ये से सेम के टाइप रो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखिबा आ से कैरेक्टरिस्टिक्स जदी फुलफिल होउची देन दैट इंडिविजुअल डेवलप आइडेंटिटी आ जदी से जो कैरेक्टरिस्टिक्स जा डेवलपमेंट होबा कथा जदी नो होउची देन ऑटोमेटिकली डेवलप कंफ्यूजन अमंग द individuals at that stage. Those are receive
proper encouragement and reinforcement through personal exploration will emerge from this stage with a strong sense of self and feeling of independence and control. যদি proper encouragement পাইলে তাহলে ডেভেলপমেন্ট হবো, proper control রে রহিব, তার সেলফ ফিলিংস এ সব জিনিসକୁ সে properly channelize করি পারিব proper way রে. Those who are remain unsure of their beliefs and desires will feel insecure and confused about themselves and the future. When an adolescent resolve these crises, then a sense of fluidity would develop. Okay, jodi si jodi properly resolve no kari parchu, properly jodi maintain no kari parchu, then automatically sense of fidelity should be developed within the individuals, jota ko ame confusion boli kahi pariba. And this is described as the sense of identity regarding who they are and what is the objective of their life. तो जो जगह रे सेमाने এই जो स्टेज रे जो इंडिविजुअल माने थाते जो एडोलेसेंस इंडिविजुअल, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट देयर ओन आइडेंटिटी, तांकर निज आइडेंटिटी को सेमाने मैक्सिमम टाइम रे खोजिया पय चेष्टा करंती एंड ऑब्जेक्टिव्स देयर ऑफ देयर लाइफ, आ तांकर लाइफ रो कोन ऑब्जेक्टिव अछि ताकू मध्ये सेमाने देखिया पय चेष्टा करंती. इफ दे आर अनेबल टू रिसॉल्व, दे डेवलप आइडेंटिटी डिफ्यूजन. Those adolescents may have an unstable sense of self jodi jonko pakare thae, and may need to belong to some group in order to develop sense of identity. Okay, to jo unstable sense re thile se ei paribon, jodi stable sense re nijoku nije se identify kari pala, then automatically identity concept should be developed among the individuals. And it is if this become a serious issue for the adolescent, might be have oppositional views and may join hate cults. ताका पाखरे hate cults रो development हुए, and that is a very negative concept for the individual for their development. So that is the fifth stage of development. Next stage को जिबा, sixth stage रे कोन देखिबा, that is intimacy versus isolation, जोटा कि 20 to 24 years but 24 years to 39 years पर्यंत उटे स्टेज रे हबो, 5 years रो उटे स्टेज रहिबो, जो स्टेज रे कि जनरली वी फाउंड intimacy and isolation. Okay, intimacy और isolation रो concept हमें देखिबा. This stage covers the period of early childhood, early adulthood period को से cover कर दबो. And this is the stage in which people start exploring personal relationship. हमें personal relationship को बेसी माने जो importance दो এই समय रे, जो बाहागर फागर हेन तन ई जो कथा सब रहउची, आमे गुटे पर्सनली अटैच्ड रहउची, गुटे पर्सनली रिलेशनशिप आम भितरे डेवलपमेंट होउची ऑपोजिट सेक्स को, तो सेही कांसेप्टटा ए स्टेज रे मैक्सिमम रुहे. एरिक्सन बिलीव दैट इट इज द वाइटल दैट पीपल डेवलप क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप विथ अदर पीपल दैट हैव एबिलिटी टू एक्सपीरियंस इंटीमेसी. सेही कांसेप्ट को हम इंटीमेसी बोली कहउचंती, जोथरे कि गुटे इंडिविजुअल some people, some individual sangre close ही जाए, committed ही जाए, आउ proper बा good relationship establish करी दिए. Those who are successful at this stage will form relationships that are committed and secure. तो यही stage रे जो relation, ता पूर्व जो relationship जो हुए, जो उठे उठा नहीं कि सब पड़े जाती, माने गुटे जो हठात गुटे तांको भितरे कौन गुटे डेवलपमेंट ही जाए, ई सब कथा जो हम पाके रुहे, से जगह रे इंटीमेसी क्रिएट हुएनी. बट एट दैट स्टेज जेहेतु ए स्टेज ता मैच्योरिटी रो कांसेप्ट कथा कहूची, बाय मैच्योरिटी कांसेप्ट रे बा स्टेज रे ई कथा कुआ जाउची, ड्यू टू दैट वी फाउंड प्रॉपर इंटीमेसी फॉर्म्ड बिटवीन द इंडिविजुअल्स. एंड दिस विल आल्सो डेवलप ए previous stage of development such as developing a strong sense of personal identity. Persons with a poor sense of self or observed to have tendency to have less committed relationship and are more likely to suffer emotional isolation, loneliness and depression. जदि ए स्टेज रे प्रॉपर्ली हमकु इंटीमेसी बा प्रॉपर रिलेशनशिप हमर एस्टैब्लिश न होईची, देन सडनली कोन हुए ना सेही जगह रे इमोशनल आइसोलेशन रो डेवलपमेंट हुए, लोनलीनेस रो डेवलपमेंट हुए और डिप्रेशन रो डेवलपमेंट हुए. तो बर्तमान 7th स्टेज को जिबा, जो स्टेज ता की जेनरेसिटी बा स्टैग्नेशन स्टेज हमें कहउचंती, जोटा की 25 टू 64 बा 40 टू 64 डिफरेंट एज रे डिफरेंट कैटेगरी पीपल मानकर डिफरेंट वे रे जो हमकु शो हुए. तो ड्यूरिंग द मिडिल एडल्टहुड पीपल कंटिन्यू टू बिल्ड देयर लाइव्स थ्रू वेरियस वे
such a building a career and bringing up or caring for the family. ओके तो एई स्टेज रे एई जो स्टेज रे जनरली कोन मिलंती आमे लोक माने कैरियर बिल्डिंग करिबारे ब्रिंगिंग अप ताकू बढ़ाइबारे एंड केयरिंग फॉर ए फैमिली फैमिली को देखिबारे फैमिली को टाइम दबारे फैमिली को जो आमे चलाउचंती एई जो कांसेप्टटा एई स्टेज रे मैक्सिमम देखा जाए ठीक अछि जदि प्रॉपर्ली गोटे लोक करि परछि ता पाखरे जेनरसिटी आछी नहले स्टैग्नेशन ऑटोमेटिक ता पाखरे डेवलपमेंट हेइ जिवो those who are successfully during this phase will feel that they are contributing to the world being active and in their home and community okay तो कौन तांका पाखरे हुए those who fail जो माने सक्सेसफुल हेबे सेमान को पाखरे जेनरसिटी रो डेवलपमेंट होबो ओके जेनरेटिविटी रो डेवलपमेंट होबो those who fail to attain this skill will feel unproductive and uninvolved in the world okay जहाँ पाखरे होबो जे जेनरसिटी जहाँ पाखरे अछि सी माने देखिबो जे मोर इन्वॉल्वमेंट रहउची जहाँ पाखरे जेनरसिटी नाही ता पाखरे स्टैग्नेशन आस जिवो आउ सी देखिबो बा सी फील करिवो आई एम नॉट ए प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग और अनइन्वॉल्वड इन द वर्ल्ड if a person has experienced a sense of creativity and success then the persons develop a sense of generativity okay जोटा कि हमें कहिले जे if a person experienced a sense of creativity and success जदि creativity और success feel कला देले ता पाखरे generativity development होबो and people do not feel this develop the sense of stagnation clear they become self absorbed do not connect easily to others and do not offer much to the society जदि से stagnant position को आसुची ताहले तो से निज आडू निज को विड्रॉ करनबो आउ तार जो डेवलपमेंट पा तार जो प्रोसेस से जो सोसाइटी को जहा देई थांता देई परिबो नाही दैट इज द 7th स्टेज ऑफ इंडिविजुअल देन द नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल स्टेज दैट इज 8 जोटी के हमें पढिबा इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर आ जोटा कि 65 पेज इयर स्टार्ट की टिल डेथ पर्यंत मरिया पर्यंत हमरो ए स्टेज रे हमें रही थांती This is a phase that occurs during the late adulthood जोटा कि old age रे हुए and is focused on reflecting the back on life जो जगह आमे कौन करू ना आमे throughout life रे कौन कौन करी के आछंती ताकू आउ थरे आमे रीकैप करू एई स्टेज रे आमे रीकैप करंती those who face conflicts at this stage will feel that their life has been wasted will experienced many regrets okay जहा लाइफ रे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थाए बा से चिंता कले जतबे ए स्टेज रे से चिंता करे तार प्रीवियस पास्ट लाइफ को नै की आ जदी से कॉन्फ्लिक्ट ता लाइफ रे पाए देन कोन हुए ना से चिंता करे सेतबेले जे ता लाइफ ता टोटली वेस्ट ही जाईची एंड विल एक्सपीरियंस मेनी रिग्रेट्स से रिग्रेट फील करे द इंडिविजुअल विल लेफ्ट विथ फीलिंग्स टू बिटरनेस एंड डिस्पायर ओके जदी एई भले फीलिंग्स हुए ता लाइफ ता ताकू बिटरनेस और डिस्पायर से फील करे ओके जोटा कि माने नेगेटिव सेंस रे हमें कहि परिबा दोज हु फील प्राउड टू देयर अकम्प्लिशमेंट विथ फील ए सेंस ऑफ इंटीग्रिटी जदी मु मोर लाइफ को जते बेले मो पास्ट लाइफ ए स्टेज रे मो अछि मो पास्ट लाइफ को देखली मते जहा करियार अछि मु करि सरछि मु गुटे सक्सेसफुल फैमिली लाइफ मेंटेन करछि मु गुटे सक्सेसफुल स्टूडेंट लाइफ मेंटेन करछि मु गुटे सक्सेसफुल सर्विस लाइफ मेंटेन करछि आ मु गुटे सक्सेसफुल स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करछि तो एई सब जते मु प्रॉपर्ली सब स्टेज रो मो लाइफ को प्रॉपर्ली मेंटेन करछि बोली फील करिवे एट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ देन आम भितरे कोन आसे ना फील ऑफ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी रो डेवलपमेंट हुए सक्सेसफुल कंप्लीटिंग दिस फेज मींस लुकिंग बैक विथ फ्यू रिग्रेट्स एंड ए जनरल फीलिंग्स ऑफ सैटिस्फैक्शंस किछि फ्यू रिग्रेट्स और जनरल फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन को हमें देखंती दीज इंडिविजुअल्स विल अटेंड विजडम इवन व्हेन कन्फ्रंटिंग डेथ तो एई स्टेज रे समान को पाखरे विजडम रो डेवलपमेंट हुए आउ समाने मृत्यु को अपेक्षा करथांती जे शीघ्र मृत्यु आसी आमे चल जिबा एई भलिया तांको पाखरे एटीट्यूड डेवलपमेंट हुए सो दीज आर द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ केमिति केमिति हम स्टेज रे कोन कोन डेवलपमेंट होउची एंड दिस एंटाइटल्स फेसिंग द एंडिंग ऑफ लाइफ एंड एक्सेप्टिंग सक्सीड्स एंड फेल्युअर्स एजिंग एंड लॉस ओके सब कथा गुडा को सेते बेले आमे रिकैप कर दू कोन पाइचंती कोन जाईची हमठू ई सब कथा हमें मनर पकू and people develop ego identity integrity and accept their lives if they succeeds and develop a sense of wisdom and those do not feel a sense of despair and dread their death okay
तो आमे 8टा जो कांसेप्ट बाबद डिस्कशन कले जो थिरे आमे देखिले जे डिफरेंट स्टेज रे केमिति केमिति हमर कोन कोन डेवलपमेंट होउची तो वर्तमान आमे देखिबा जे व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी आम एरिक्सन्स थ्योरी कर को कथा गोटे स्ट्रेंथ पार्ट रहइबो आ को कथा गोटे वीकनेस पार्ट रहइबो फर्स्ट आमे देखिबा क्रिटिसिज्म करिबा वीकनेस कांसेप्ट रे आमे देखिबा one major weakness is the psychosocial theory is that the exact mechanism for the resolving conflict and moving from one stage to the next are not well described and developed तो गुटे स्टेज रु आ गुटे स्टेज को प्रॉपर्ली जो आमे जंप करूचंती जाउचंती ता बाबद रे कंप्लीट कथा क्लियर कथा मेंशन नाही जो कॉन्फ्लिक्ट एराइज होउची से कॉन्फ्लिक्ट को केमिति साइकोलॉजिकली मैनर रे आमे डील करिवा से कथा मध्य ए थ्योरी किछि डिस्क्राइब कला नाही दैट इज द फर्स्ट important criticism. Second one is the theory fails to detail exactly what type of experience are necessary at each stage. प्रति स्टेज रे कोन प्रकार रो हमर एक्सपीरियंस दरकार से कथा मध्ये एठी डिस्क्राइब करा जाई पारे नाही in order to successfully resolve the conflicts and move to the next stage. केमिति हमें गुटे स्टेज रे प्रॉब्लम को सॉल्व करियो आ गुटे स्टेज को जिबा से कथा मध्ये एठी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब हेई नाही सपोर्ट रे हमें बा स्ट्रेंथ पार्ट रे हमें कोन कोन कहिबा now one of the strengths of psychosocial theory is that it provides a broad framework from which the viewpoints throughout the entire lifespan तो हमरो जते आगु सब थ्योरी पढिचंती गुटे पर्टिकुलर स्टेज पर्यंत तांको थ्योरी रो कथा को नेकी जेमति पियाजन कथा कहिबा बा हमें जो भाइगोस्की कथा कहिबा विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट अछंती से माने गुटे पर्टिकुलर स्टेज पर्यंत नेकी तांको कंप्लीट बा तांको स्टेज को तांको डेवलपमेंट को कंप्लीट करचंती बट एरिक्सन्स तांकर माने फ्रॉम बर्थ टू डेथ विभिन्न स्टेज रे डेवलपमेंट को से डिफाइन करिले दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट टू दिस थ्योरी एंड सेकंड वन इज इट आल्सो फॉलो अलाउज अस टू एम्फसाइजेस द सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग आमे सोशल नेचर गुटे ह्यूमन बीइंग रो ताकू जज करि पारंती एंड द इंपोर्टेंट इन्फ्लुएंस दैट सोशल रिलेशनशिप हैव नो डेवलपमेंट ओके तो एई कांसेप्ट बाबद रे आमे सपोर्ट रे थ्योरी को डिस्क्राइब करि परिबा then the last part that is why was Erikson's theory is important काहे कि हमें देखिबा Erikson's theory को पार्ट रे को पर्पस रे इंपोर्टेंट बोली हमें कहउचंती so the theory was significant because it addressed development throughout the person's life रो डेवलपमेंट होउची केमिति को प्रोसेस रे होउची जोटा हमें आगु लर्निंग थ्योरी बा लर्निंग रे पढुतलु जे लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रूआउट आवर लाइफ वी फाउंड लर्निंग वाज मेंटेन्ड तो ए जो कथाटा को हमें एरिक्सन्स प्रूव कले ठीक अछि नॉट जस्ट ड्यूरिंग एट चाइल्डहुड इट आल्सो स्ट्रेस द इंपोर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन शेपिंग पर्सनालिटी ग्रोथ ईच पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट एवरी पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट रे हमें केमिति हम पर्सनालिटी को शेप दोउचंती प्रॉपर्ली हमें ताको गाइड करूचंती से जिंसटा थ्रू आउट लाइफ केमिति होउची एरिक्सन्स ताको थ्योरी रे डिस्क्राइब कले ड्यू टू दैट एरिक्सन्स थ्योरी हैज ए सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस ओके थैंक्स फॉर वाचिंग तो आउ आगु आगु नुआ वीडियो हम पुनी आनिबु तो स्टे ट्यून्ड विथ अस थैंक यू